हमने ये काम किया है और उसके ये फ़ायदे हासिल हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये करेंगे। आपको कुछ कहना था, आप शायद, आई थिंक। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी कांग्रेचुलेशन फॉर दिस ऑल एंटायर सेटअप। अच्छा, मैं छोटा सा, जैसे डॉक्टर असलान की बात करते हैं, नबी साहब ने बात की, मुझे भी कहीं ये लगता है इट्स नॉट जस्ट IT इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात है, ओवरऑल पाकिस्तान का डर है कि हम 40 साल पीछे चले जी, मुझे आगे जाने के हम पीछे। एक छोटा सा सजेशन है, जिस तरह आपने कहा कि यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जेंडर एंड यूथ, खातून को भी ऐड कर दीजिए, यहाँ मौजूद नहीं है, मैं याद। ओके, थैंक यू। और दूसरा ये कि जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज एग्जिस्टिंग हैं उनको स्ट्रेंथिंग क्यों नहीं करते, उनको एम्पावर, जैसे PSQC की है, वो सर्टिफिकेशन देती है, मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हूँ, वो काफ़ी अच्छी लेबोरेटरी है। वो अंडरमाइन इसलिए है कि हम लोग उसके साथ कनेक्टेड नहीं हैं। अगर उसको यूटिलाइज कर लिया जाए तो मेरे ख्याल है कि एक अच्छा फोरम है, और उसको स्ट्रेंथिंग कर लें, मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें वहाँ टेस्ट होती हैं। और दूसरे, यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव है, उसको किसी तरह डुएबल बना लें, एक्सेसिबल जनरल पब्लिक के लिए, तो ज़्यादा अच्छा हो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जो एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज हैं बजाय नई क्रिएट किए जाए, उनको अपडेट करवा लें, अपनी इंटरेस्ट के साथ काम करें। थैंक यू। वालेकुम। शाहिद साहब ने इकोनॉमिक अटारकी की बात की थी कि इंडिया में अप टू 91 जो है वो इकोनॉमिक अटारकी थी, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी उनके यहाँ, उसको उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी जो आज के फोरम से कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम रिक्वेस्ट कर दें कि इस इंडस्ट्री को इकोनॉमिक अटारकी दे दें फॉर सर्टेन पीरियड, और उसके बाद जब ये डेवलप हो जाए अपने 5-10 साल में, 20 साल में, फॉर टाइम के, उसके बाद जो है ना फिर वो आप बेशक उनको इम्पोर्ट खोल दें, जैसे ये अभी नवीद के साथ हुआ, और बाकी और अफराद भी मैन्युफैक्चरिंग से बात कर रहे थे। तो उनको कम्पीट करने के लिए भी जो है ना वो कंपोनेंट्स पे जो है ना जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपोनेंट्स है उस पर इंडस्ट्री, उस पर ज़्यादा ड्यूटी है एज कम्पेयर टू दी कंप्लीटली नॉक डाउन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नवीद, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने यहाँ पर आना शुरू किया सिर्फ आपकी वजह से, लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा है आने के बाद कि मैंने गलती की कि मैं यहाँ क्यों नहीं आता था पहले से। तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ आएंगे, हमारे साथी आएंगे, और आप मिल के जो है कोई ना कोई प्लान करेंगे, और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह हम सबसे आपसे वादा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब हम इसी तरह कहीं बैठ के खड़े होंगे, अगर ज़िंदगी रही तो बात कर रहे होंगे, तो हम आज के बेसिस पे क्या डेवलपमेंट की ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने आपकी समा खराशी की, कोई गलती मुझसे हो गई हो, माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अभी तशरीफ़ रखिएगा आप सब लोग। जी, आप लोग भी प्लीज़। बहुत शुक्रिया तमाम, ख़ास तौर पर असगर साहब का और तमाम पैनलिस्ट का और तमाम ऑडियंस का कि उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन की। मेमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंजीनियर खालिद परवेज साहब से, जो कि VP साउथ हैं IEEE के, ठीक है। और इसके अलावा आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ बदर एक्सपो सॉल्यूशंस टू इनाम नबी साहब ऑफ कूलमैक्स। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ वो तशरीफ़ लाएं। अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद असलम साहब, मिस्टर उमैर अंसारी, जावेद दिलावर साहब, और आखिर में इस इवेंट के कैप्टन जनाब असगर साहब। हाँ, असगर साहब, I really enjoyed your oratory skills. Once again, from Badar Expo Solutions and IEEE, I am thankful to Coolmex
and Inam Nabi Sahab. It's 5 p.m. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Guest, Minister of Maritime Affairs, Muhammad Junaid Anwar Chaudhry, has arrived. Ladies and gentlemen, can I please request all of you to please rise for the national anthem of Islamic Republic of Pakistan. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. I would like to request my team to please play the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Satan the accursed. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. And it is He who subjected the sea, for you to eat from it tender meat, and to extract from it ornaments which you wear. And you see the ships billowing through it, and He subjected it, that you may seek His bounty, and perhaps you will be grateful. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Subhanallah. Honorable Chief Guest,
Minister of Maritime Affairs Mohammad Junaid Anwar Chaudhry, Vice Admiral Raja Rab Nawaz, Hilal-e-Imtiaz Military, Sitare Bisalat, Chief of Staff, Vice Admiral Muhammad Faisal Abbasi, Hilal-e-Imtiaz Military Commander Karachi, Mr. Zuhair Nasir, the CEO of Badar Expo, respected delegates, exhibitors, excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I, Sara Baloch, on behalf of the PIMEC 2025, would like to welcome you all to the closing ceremony of second edition of Pakistan International Maritime Expo and Conference 2025. What a wonderfully organized event it has been. Truly indeed a matter of great pleasure to see the PIMEC gaining prominence among the global maritime exhibitions. It is indeed heartening to have witnessed overwhelming participation from all the maritime sectors during PIMEC 2025. We're extremely thankful to our local and foreign guests, exhibitors, worthy speakers, and delegates for their heartfelt participation and making this event a great success. PIMEC 2025 has been an ideal platform for maritime sectors to access the best knowledge, products, and technology available to cater for respective requirements. Ladies and gentlemen, I would like to invite Vice Admiral Muhammad Faisal Abbasi, Hilal-e-Imtiaz Military Commander Karachi, for summing up of the PIMEC 2025 exhibition. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Muhammad Junaid Anwar Chaudhry, Honorable Federal Minister for Maritime Affairs, Vice Admiral Raja Rab Nawaz, Hilal-e-Imtiaz Military, Satare Basalat, Chief of Staff, Excellencies from Diplomatic Corps, international delegates, senior military officers from friendly countries, industry partners, representatives of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning. It is my honor and great pleasure to welcome you all at the closing ceremony of Pakistan International Maritime Exhibition and Conference 2025 and present a brief conclusion on outcomes of the second edition of PIMEC. This flagship initiative of Pakistan Navy, held under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, was envisioned to accelerate the growth of Pakistan's maritime sector and to unlock the immense potential of our blue economy for national prosperity. Over the past 4 days, PIMEC 2025 has brought together policymakers, industry leaders, researchers, and maritime professionals from across the globe, united by shared commitment of cooperation, innovation, and sustainable development. Before proceeding, I record my profound gratitude to the Ministry of Maritime Affairs, other federal departments, Government of Sindh, Pakistan Navy, military and civil law enforcement agencies, National Institute of Maritime Affairs, Badar Expo Solutions for their tireless efforts and seamless support for making this exhibition a great success. We take immense pride in leading this national effort, an event that reflects the resilience and forward-looking spirit of Pakistan's maritime community. More than an exhibition, PIMEC 2025 has provided a platform for economic progress, testament to how our vision, technological advancements, and collaboration opportunities can define a sustainable maritime future for all of us. Distinguished guests, PIMEC 2025 has served as a milestone in Pakistan's maritime journey. The exhibition featured 4 key clusters: shipbuilding, repair and marine engineering,
port infrastructure, logistics and green port solutions, offshore and marine energy exploration, fisheries, aquaculture, marine biotechnology and digitalization, maritime defense security technologies, and human resource development in maritime domain. These clusters transform an engagement from display into genuine business collaboration, generating opportunities for joint ventures, contracts, and MOUs. This year's participation was truly global, with delegates from 44 countries, including 28 foreign and 150 national exhibitors, reflecting the growing international interest in Pakistan's maritime potential. We witnessed strategic partnerships, including conclusion of 83 MOUs worth 76 billion Pak rupees, which includes 268 million US dollars and 6.6 billion Pak rupees, and 363 B2B, B2G and G2D engagements in fisheries, shipbuilding, logistics and port services. Academic and research institutions demonstrated strong research industry linkages in marine biotechnology, desalination and renewable energy. Capacity building remained a key focus. Training institutions and maritime education programs showcased during PIMEC complement the policy dialogue, ensuring that our youth and professionals are equipped to lead Pakistan's maritime transformation. We are deeply grateful to our international partners for their active participation, technological contributions, and commitment to sustainable maritime development, raising PIMEC to a new international standard of excellence. Ladies and gentlemen, alongside the exhibition, International Maritime Conference, jointly organized by Pakistan Navy and NEMA, convened experts and policymakers under the theme Harnessing Blue Economy Potential for Sustainable Development. The inaugural session set a strong policy direction, emphasizing the need to mainstream the blue economy into Pakistan's national development agenda. Speakers during subsequent sessions underscored the importance of technological modernization, eco-friendly practices, and public-private partnerships to enhance competitiveness and sustainability. Discussions reaffirmed that security at sea remains the foundation of maritime prosperity, calling for greater regional cooperation, digital integration, and climate resilience. The conference concluded with actionable recommendations, reaffirming Pakistan's commitment to a sustainable, secure, and inclusive maritime future. Distinguished delegates, the success of PIMEC 2025 lies in its outcomes. To sustain this momentum, Pakistan Navy, in collaboration with Ministry of Maritime Affairs, will compile an outcome dossier detailing all MOUs, commercial leads, and proposed projects. This will be shared with government and industry partners to translate these outcomes into tangible progress. Ladies and gentlemen, Pakistan's geostrategic location at the crossroads of global trade and the gateway of Arabian Sea positions us to become a key regional maritime hub. Through CPEC and the continued development of Karachi and Gwadar ports, Pakistan is advancing toward this vision of connectivity and prosperity. Let me also reaffirm that Pakistan Navy stands resolute in safeguarding our maritime frontiers and will, inshallah, continue to ensure freedom of navigation and protect lawful maritime commerce. Equally vital is sustainability. Our growth must remain climate aware and eco-sensitive. We will continue aligning with global best practices in fisheries management, green port operations, and low-carbon shipping technologies. The path ahead lies in partnership between government, industry, academia, and technology, and between Pakistan and our partners from across the globe. The blue economy will thrive only through shared responsibility and collaboration. To conclude, PIMEC 2025 has demonstrated that Pakistan possesses both the vision and capability to host a world-class maritime event that advances commerce, fosters innovation, and strengthens the linkages between policy, industry, and academia. I extend my heartfelt gratitude to all our delegates, exhibitors,
visitors and the media for making this event a resounding success. I wish all our international guests safe travels back home and keenly look forward welcoming you all again, inshallah, in 2027. As we close this chapter, let us reaffirm our commitment to a secure, sustainable, and prosperous maritime future. Pakistan Navy remains steadfast in safeguarding our seas and supporting national development. I also look forward to seeing the legacy of PIMEC manifest in projects, policy incentives, and growth with shared prosperity and responsibility. I thank you all. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Paindabad. Thank you, sir, for shedding a light on PIMEC 2025 exhibition. Moving on, I would now like to invite our chief guest, Honorable Minister of Maritime Affairs, Muhammad Junaid Anwar Chaudhry, for his address. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil kareem. Honorable delegates, excellencies, chief of staff, officers, media persons, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and good morning. It is a great honor for me to welcome you all at the closing ceremony of PIMEC 2025. It is the flagship event of first Pakistan Maritime Week. Your presence shows our shared resolve to make Pakistan a strong, connected, prosperous maritime nation. Ladies and gentlemen, oceans are the arteries of global trade and they shape the prosperity of nations. With more than 1,000 kilometers of coastline and location at the crossroads of South Asia, Central Asia, the Middle East, and East Africa, Pakistan is naturally positioned to be a regional maritime hub. After years of underutilization, our seas are now becoming the center of our economic vision, trade strategy, and sustainable growth. PIMEC 2025 is not just an exhibition. It's a statement of Pakistan's maritime intent. The event has gathered international partners, investors, experts, and maritime professionals to explore the vast opportunities across the blue economy. Under the guidance of our Honorable Prime Minister, Mia Muhammad Shehbaz Sharif, we have launched an ambitious reform agenda to unlock this potential. We are pursuing the Maritime at 100 vision, aiming to build $100 billion blue economy by 2047. Over the past few months, we have achieved meaningful progress. The Pakistan National Shipping Corporation fleet has grown from 10 to 12. 3 more ships will arriving over the next 2 months, inshallah. This amounts to 60% growth in just 5 months. Our target is 30 ships by 2026 and 60 within 3 years, inshallah. We also processed award of license to first ever private sector company for the ferry service.
We have initiated the establishment of Pakistan's first green ship repair and recycling yard at Port Qasim, which is part of our sea to steel integrated maritime industrial complex. That will also support the revival of Pakistan's steel mill. We are reviving the Gadani ship recycling yard with 12 billion rupees investment, fully equipped with Hong Kong Convention environmental standards. The National Fisheries and Aquaculture Policy 2025 to 2035 has been finalized, targeting the double fisheries exports within 1 year, inshallah. Ladies and gentlemen, as we launch Pakistan's Maritime Week, we also look far beyond the present of Pakistan's Maritime Century 2047. My vision for this century is very clear. The sea is our next frontier for trade, prosperity, energy, food, and climate resilience. By 2047, we aim to transform Pakistan into a globally recognized blue economy powerhouse, driving regional integration and sustainable maritime growth across the North Arabian Sea and Indian Ocean. My vision for next century is based on 5 pillars, which include: we have Port 1, Port 2, Port 3, Port Qasim, KPT, and Gwadar. Development of 3 new deep sea ports, Port 4, Port 5, and Port 6, inshallah. Expanding the national shipping fleet, which can carry Pakistan's own seaborne trade and bring sea freight bill to minus, inshallah. Building artificial intelligence-enabled maritime industrial complex for shipbuilding, ship repair, and ship recycling. I envision made in Pakistan ship in future, inshallah. Achieving 100% digital and green ports with multimodal connectivity through road, rail, and air. Leading regional maritime cooperation, promote peace, sustainability, and shared prosperity across our sea. I state with conviction that Pakistan's second century belongs to the blue economy, inshallah. Together, let's make Pakistan not only maritime nation, but a maritime leader be. Thank you very much. अब मैं थोड़ी सी बात अपनी ज़बान में भी करना चाहूँगा, जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैंने जब से इस मिनिस्ट्री का चार्ज लिया और इस मिनिस्ट्री को देखा, तो यकीन जानिए बहुत कुछ है इसमें। ये हम 100 अरब रुपए का टारगेट जो लेके चल रहे हैं, ये कोई टारगेट नहीं, लेकिन हमारा अज़म मजबूत होना चाहिए और इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए नीयत होनी चाहिए। तो हम ये 100 अरब नहीं, हम कई 100 अरब यहाँ से निकाल सकते हैं और अपने मुल्क की मईशत को हम और मजबूत कर सकते हैं। हमें मेड इन पाकिस्तान का सोचना चाहिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इस पाकिस्तान को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं जब हमारे मफादात, हमारी अर्निंग्स, इसमें कोई थोड़ी बहुत कमी आती है। हमें मेड इन पाकिस्तान का सोचना चाहिए। मैं अपनी मिनिस्ट्री का आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके या आपके साथ वादा करता हूं कि आप आइए, हम जो फॉरेनर्स को भी वेलकम कहेंगे, ये आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें, बिल्कुल उनका भी हक है,
लेकिन आपका भी उतना हक है। आप आइए, और मैरीटाइम सेक्टर में जो आज मैं यकीन के साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया ये बात कहती है कि हमारी ब्लू इकॉनमी जो है ये हमारा फ्यूचर है। तो मैं आपको ये आज दावत देता हूँ कि आप आइए, मेरे अदारे, मेरी पोर्ट्स, मेरी पोर्ट कासम, मेरी केपीटी, हमारा ग्वादर, हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट आपके लिए दिन रात सर्विस देने के लिए तैयार हैं। और आपको कोई मसला हो तो आप इन अदारों में जाइए, आप मिनिस्ट्री से रब्ता कीजिए। हम हर तरह की आपको फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ, और ये मेरा अज़्म भी है, जिस तरह अभी फैसल अब्बासी साहब ने भी कहा कि हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारी नीला पानी, हमारे साहल आज आपकी राह देख रहे हैं। ये आज इंशाल्लाह मेरा एक और अज़्म भी है कि हम इंशाल्लाह ताला अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ, जो आज मेरे साथ उन्होंने मिलना भी है, कि हम इंशाल्लाह अपना एक पाकिस्तान टर्मिनल बाय पाकिस्तानीज भी बनाएंगे, जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप आइए, इसमें हिस्सा लीजिए। फॉरेनर्स तो हमारी मईशत में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भी एक जज्बे के तहत आएँ और इन हवाओं को बदलें और पाकिस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much, sir, for sharing your vision towards the maritime affairs of Pakistan. If I can please request you to stay on the stage as we are now moving towards the official awards ceremony for the exhibitors and chief guests. Ladies and gentlemen, I would like to welcome Vice Admiral Raja Rabnawaz, Hilal Imtiaz Military, Sitare Bisalat, Chief of Staff, to please come on the stage. We have with us Vice Admiral Muhammad Faisal Abbasi, Hilal Imtiaz Military Commander, Karachi. We have also been joined by the CEO of Badar Expo Solutions, Mr. Zuhair Nasir. Now moving on to the first category. In the category 72 square meter or above, 2 national companies are the recipient of this award. Up first, we have Pakistan Navy. Up next, we have livestock and fisheries. Moving on to the next category. In the category of 72 square meters or above, 2 international companies are the recipient of this award. Up first, we have Ministry of Defense, Iran.
Up next, we have Afsat. We have Asfat with us. Congratulations, Asfat. Moving on, we have the next category of 50 square meter space or above. 2 national companies are the recipient of this award. Up first, we have Sindh Investment Department. Up next, we have Pakistan National Shipping Corporation. Moving on to the next category of finalized national award winners of 50 square meters below. 2 national companies are the recipient of this award. We have with us Aerospace Bakery Pakistan Private Limited. Up next, I would like to call National Radio and Telecommunication Corporation, NRTC, to please come on the stage and receive your award. Moving on to the final award category of finalized international award winners of 50 square meter or below, I would like to call Water Master Aquamic. We have the international company here with us.
Congratulations to all the awardees of PIMEC 2025. Now, I would like to request Vice Admiral Raja Rab Nawaz Hilal-e-Imtiaz Military Sitare-e-Bisalat, Chief of the Staff, to please present the memento to our Chief Guest, Minister of Maritime Affairs, Muhammad Junaid Anwar Chaudhry. We've also been joined by Mr. Zuhair. Now, I would like to request all the guests to please move forward for the digital kiosk as we are about to unveil the date of the PIMEC 2027. Ladies and gentlemen, this It's 6 p.m. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोनिम ठाकुर, आई एम फ्रॉम लाहौर और हमारी कंपनी बेसिक डील करती है जी काओ इंपोर्ट में। अभी इस टाइम भी हमारे ओनर कंपनी के डॉक्टर मलिक उमर फरूकवान साहब इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में एनिमल्स की शिपमेंट के लिए वो इस टाइम एनिमल सिलेक्शन के लिए गए हुए हैं, लिहाजा अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया से एनिमल शिपमेंट आ रही है। और इस टाइम हमें डेल्फा और सिंध गवर्नमेंट की तरफ, लाइफ स्टॉक की गवर्नमेंट की तरफ से हम उनके बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने हमें इधर इनवाइट किया और इधर मैंने बहुत खुश हुआ हूँ इधर के देख के, जिस तरह स्टूडेंट्स और काफ़ी यानी कि फार्मर्स का बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना। सिंध गवर्नमेंट और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस और डेल्फा का हम बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और लिहाजा हमें इससे मुस्तफ़ीद होने का बहुत मौका मिला। और काफ़ी यानी कि क्लाइंट्स हैं यहाँ, कुछ फार्मर्स हैं जिन्होंने अपना ग्रेट इंटरेस्ट शो किया हमारे साथ, तो इसके लिहाज से डेल्फा और सिंध गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब हुसैन है और मैं रिसर्च ऑफिसर हूँ लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। तो बेसिकली ये जो एक्सपो 2025 यहाँ पे जिसकी एग्जीबिशन यहाँ की गई है बदर एक्सपो में, तो ये कोलेबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध यानी लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और उसके अलावा डेल्फा वालों का एक कोलेबोरेशन है। बेसिकली यहाँ पे ये करना है कि जो एनिमल लवर्स हैं या जो एनिमल एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है नेटवर्किंग का, टेक्नोलॉजी को सीखने का, या जितनी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज इस फील्ड में आ रही हैं। ये लाइव स्टॉक बेसिकली क्या है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारा जो एग्रीकल्चर कंपोनेंट है वो 60% पाकिस्तान का है और उस 60% में जो है वो 43% लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है। तो मैं अपने बारे में बात करूंगा कि मैं लाइफ स्टॉक के जिस कंपोनेंट से मेरा ताल्लुक़ है वो है एनिमल ब्रीडिंग। हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी इंडाइजीनस यानी लोकल ब्रीड्स हैं और उसके अलावा जो एक्सोजीनस ब्रीड्स हैं, हम उनकी जो है अफजाइश नस्ल, अगर उर्दू में बात करें तो अफजाइश नस्ल पे काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम अच्छी नस्ल की सीमिन की प्रोडक्शन करते हैं और एग्जोटिक सीमिन को जो है वो बाहर दुनिया से पाकिस्तान में लाते हैं। तो हम पहला काम ये करते हैं कि हम अपनी जो है इंडाइजीनस ब्रीड्स जितनी भी हैं उनको प्रिजर्व करें और उनकी मिल्क और मीट की क्वालिटी को बेहतर बनाएं और बढ़ाएं।
उसके अलावा जितनी भी एक्जोटिक ब्रीड्स हैं जैसे ब्राह्मण है, जर्सी है या फ्रीजियन है, वो भी हम यहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड्स के साथ मिक्स करके मीट और मिल्क की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसको बेहतर करें। उसके अलावा जो हम लोग करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ट्रेनिंग करवाते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट हमारा जो ये है कि हम मिल्क और मीट की प्रोडक्शन को बढ़ा के जितनी भी हमारी पॉपुलेशन की ज़रूरियात हैं उनको जो है वो हम पूरा कर सकें। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और उसके अलावा डेल्फा का और बदर एक्सपो वालों का कि यहाँ ये आज दूसरा दिन है और यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ है और बड़ा स्मूथली जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो आवाम इंगेज्ड है यहाँ पे। और बाकी लोग जो देख रहे हैं, आज आधा दिन पड़ा हुआ है और कल का दिन बाकी है, तो लोगों से मैं गुजारिश करूँगा यहाँ आएँ। यहाँ पेट शो है, यहाँ मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, यहाँ लार्ज एनिमल्स हैं, यहाँ आपको जो है वो स्मॉल एनिमल्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको देखने के मिलेंगी। उसके अलावा इंडोर्स में अगर देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोगों के एग्जीबिशंस लगे हुए हैं। आपको जो ख़ास तौर पे नौजवान कराची के हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके अपनी नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स ओपिनियन और रिसर्च के जो है वो सेमिनार भी चल रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज का ख़जाना है। यहाँ आके आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं और आपके लिए बिज़नेस के बहुत सारे मौके भी हैं। थैंक यू वेरी मच। At Badar Expo Solutions, we are committed to connecting people, creating values, and delivering impactful events. Our mission is to make emerging healthcare trends and innovations accessible globally, while fostering meaningful B2B matchmaking opportunities between local and international stakeholders. हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर हमने शुरू की, इस साल इसका सेकेंड एडिशन है। अगेन इसे एक बहुत बड़ी मैं सक्सेस समझता हूँ कि पहले सेशन के बाद हम दूसरे एडिशन के ऊपर आए। Your vision and dedication in promoting Pakistan healthcare industry through such high-level platform is really commendable. Let me start by congratulating Mr. Zohair from Badar Expos and the spirit behind Abid Abbas Sheikh Saab for arranging such a beautiful conference. ये सिर्फ एक नुमाइश या एग्जीबिशन नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सफ़र है जिसकी बुनियाद डाली जा रही है। और हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो मैं ज़ोहैर नसीर साहब आपको और आपकी टीम को, बदर सॉल्यूशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। I'd like to thank the dignitaries and all the guests, the
sponsors, the exhibitors who have been with us through the years and have made this event possible. It is a great opportunity for the investors and even the dealers and the distributors to participate and engage in this seminar, and I further request the management of Badar Expo to continue these seminars for the general awareness of the people.
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब हुसैन है और मैं रिसर्च ऑफिसर हूँ लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। तो बेसिकली ये जो एक्सपो 2025 यहाँ पे जिसकी एग्जीबिशन यहाँ की गई है बदर एक्सपो में तो ये कोलेबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध यानी लाइव स्टॉक और फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और उसके अलावा डेल्फा वालों का एक कोलेबोरेशन है। बेसिकली यहाँ पे ये करना है कि जो एनिमल लवर्स हैं या जो एनिमल एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है नेटवर्किंग का, टेक्नोलॉजी को सीखने का, या जितनी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज इस फील्ड में आ रही हैं। ये लाइव स्टॉक बेसिकली क्या है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारा जो एग्रीकल्चर कंपोनेंट है वो 60% पाकिस्तान का है और उस 60% में जो है वो 43% लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है। तो मैं अपने बारे में बात करूंगा कि मैं लाइव स्टॉक के जिस कंपोनेंट से मेरा ताल्लुक़ है वो है एनिमल ब्रीडिंग। हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी इंडाइजीनस यानी लोकल ब्रीड्स हैं और उसके अलावा जो एक्सोजीनस ब्रीड्स हैं, हम उनकी जो है अफजाइश नस्ल, अगर उर्दू में बात करें तो अफजाइश नस्ल पे काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम अच्छी नस्ल की सीमिन की प्रोडक्शन करते हैं और एग्जोटिक सीमिन को जो है वो बाहर दुनिया से पाकिस्तान में लाते हैं। तो हम पहला काम ये करते हैं कि हम अपनी जो है इंडाइजीनस ब्रीड्स जितनी भी हैं उनको प्रिजर्व करें और उनकी मिल्क और मीट की क्वालिटी को बेहतर बनाएं और बढ़ाएं। उसके अलावा जितनी भी एक्जोटिक ब्रीड्स हैं जैसे ब्राह्मण है, जर्सी है या फ्रीजियन है, वो भी हम यहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड्स के साथ मिक्स करके मीट और मिल्क की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसको बेहतर करें। उसके अलावा जो हम लोग करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ट्रेनिंग करवाते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट हमारा जो ये है कि हम मिल्क और मीट की प्रोडक्शन को बढ़ा के जितनी भी हमारी पॉपुलेशन की ज़रूरियात हैं उनको जो है वो हम पूरा कर सकें। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और उसके अलावा डेल्फा का और बदर एक्सपो वालों का कि यहाँ ये आज दूसरा दिन है और यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ है और बड़ा स्मूथली जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो आवाम इंगेज्ड है यहाँ पे। और बाकी लोग जो देख रहे हैं, आज आधा दिन पड़ा हुआ है और कल का दिन बाकी है, तो लोगों से मैं गुजारिश करूँगा यहाँ आएँ। यहाँ पेट शो है, यहाँ मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, यहाँ लार्ज एनिमल्स हैं, यहाँ आपको जो है वो स्मॉल एनिमल्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको देखने के मिलेंगी। उसके अलावा इंडोर्स में अगर देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोगों के एग्जीबिशंस लगे हुए हैं। आपको जो ख़ास तौर पे नौजवान कराची के हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके अपनी नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स ओपिनियन और रिसर्च के जो है वो सेमिनार भी चल रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज का ख़जाना है। यहाँ आके आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं और आपके लिए बिजनेस के बहुत सारे मौके भी हैं। थैंक यू वेरी मच। Also within the industries, we are well connected. We know what the past has been running, what are the issues facing, how they tackle the past. So our technical teams are well connected into the industry. So
we know, and the practice been done. People have an hands-on experience on that. So BESS is not so. It's not an easy. Can just take it. Okay, so in a way, from what I can gather from your views, that things are not as bad as generally understood, and there are good companies. Of course, there's so many people who are dealing with BESS and all these things. You must be doing that. But you have to be very selective, very careful in making the right selection, right? You are a consultant. You must be knowing that. आप कुछ कह रहे? No. Okay. We find that globally buyers like IKEA, H&M, Zara, they are demanding green supply chains. If Pakistani mills don't adopt clean energy, we could lose the major export market. Are you satisfied overall, not for your own mill or not for your own industry, but are you satisfied overall for the textile sector that we are moving in the right direction? Sir, all the big textile industry, like top, if you talk about 10 to 15 top exporter of Pakistan, so they are investing in renewable. And overall that we have discussed, we only discuss about one thing, which is power. And Fahad mentioned one thing, that was net zero. In net zero, basically there are three parameters. That is not only all about like power generation, it's also about the steam generation, where you use the natural gas for the gas combustion to convert water into steam. So there is second thing, which is steam, and the third one is the water. So they are measuring out your all the carbon footprint, whatever the gas you are burning out, and whatever the effluent that you are using, how much liter of water you are using for the manufacturing of the fabric. So since the top exporters, they are putting up millions of dollars in renewables, like the biomass power plant for the it's a renewable power plant for the generation of steam. We have put up also the wastewater recycling system. Hence, we can minimize the carbon footprint. For the top-notch industry, the top-notch exporter, it will be not a huge problem. But for the small and medium grade industry, which are also working for the European and US buyer, yes, there will be a problem in the longer run if they will not adopt the renewable. Right. You see, we have net metering, we have captive solar, they're growing rapidly. So, are there any moves within the textile sector to really completely bypass the national grid, the utilities, and have sole dependence on its own resources of renewables and BESS and all that? Because that helps you not only in maintaining the continuity of supply, but also saves you from the power quality issues. Yes, agreed. But we need to have a grid connected to be on a safer side. For the surplus orders, if we get, and the stability, there should be a backbone behind that. So we are trying to move towards the net zero, towards the carbon emission reduction and energy. Like we have around 100 acres of the land, and we are running 40 megawatts. But on that land, we can only put up 6 to 7 megawatt power generation on the solar. So eventually we need more power, and that will be possible only through the grid. Whether it has to be a policy where grid can be a greener for the industries. That's my we cannot move the whole process out of it. Again, I'm a bit confused about what the customers are asking for, and asking us that okay, you should not use the fossil fuel energy based systems by 2029 or 30, whatever it is. And at the same time, because they know that there is not so much renewable infrastructure available in Pakistan to ensure that all the textile mills can comply by that requirement, so they are saying that okay, you can use the grid energy. Now it's a contradiction. Grid energy is not being made by the renewables entirely. Grid energy is from gas also, from the furnace oil also. So there are so many
fossil fuel based energy system that the grid is using. So at one point they are saying that don't use that, and at the same time allowing and asking for buying the carbon credits. So what's the point of negating your own policy or philosophy that you're asking for? So rather than, it should be something more practically possible for companies in Pakistan to allow the fossil fuel based energy, which is not abundant but so far available in large quantities. So, and then buy carbon credits to offset them. That's one possibility. Their requirement is to offset, because in Europe right now also there is so much of a carbon credit buying practices by so many industries, because they use fossil based